Welcome to Campus Puram. Today we are going to Malwa School, Gidarwa. Malwa School, Gidarwa is a dream project of late Bibi Surinder Kaur, who always took a keen interest in such welfare-oriented education activity. She realized the importance of quality education for the children in this area. She was highly passionate about spreading quality education in every nook and corner of Malwa belt, and this prestigious school is the outcome of her concerted effort over a long period of time. Sardar Prakash Singh Badal is the chairman of the school and Sardar Sukhbir Singh Badal is the vice chairman of the school. The school has come a long way from its humble beginning in the year 1986 when it was started as a primary school to provide quality education to the children of Gidarwa town. This school is the only ICSE school in the region and had been instrumental in fulfilling the aspiration of scores of Malwatis. Its alumni today are holding leadership positions in armed forces, medical field, engineering and many more. The staff of the school is very experienced. Along with the studies, there are so much co-curricular activities for the students. Our team talked to the principal of the school and he told about the detailed information about the school. And also, Malwa School celebrate junior wing function. On this occasion, students participate this function at higher level. Let's visit Malwa School, Gidarwa. Sir, as the tradition, मालवा स्कूल जो कि कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी धार्मिक समागम हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अभी खालसे का जन्म दिहाड़ा, बैसाखी का पवित्र त्यौहार आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि यूनियर विंग में एक बहुत बढ़िया जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है फंक्शन, और 22 तारीख को इसमें भी जो है फंक्शन मनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर कि ये जो स्कूल है वो कला के साथ जुड़ा हुआ, वो इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ कि हर तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर बच्चों को मिलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत स्कूल के अंदर सर। आज एक बड़ा पवित्र मौका है बिकॉज अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर बैसाखी का त्यौहार ने ये ਜਿਹੜਾ स्कूल है पढ़ाई लिखाई के अलावा साड़ी जी कल्चरल हैरीटेज है उसके उत्ते भी काफ़ी ध्यान देता है जी। वो किसी भी रिलीजन का कोई भी त्यौहार हो असी बहुत वड़ चढ़ के उन्होंने मनाते ने, ना सिर्फ वो त्यौहार के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं बट साड़ा ये एफर्ट होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे, उस त्यौहार की बैकग्राउंड के बारे कुछ पता चले। बैसाखी का त्यौहार है तो सारे बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या उनका रिलीजन है, कौन से इलाके के हैं, आर दे फ्रॉम पंजाब या बाहर के हैं, वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम हाउ डिड द दिस ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग बैसाखी स्टार्टेड, आनंदपुर साहब में क्या हुआ था, उसके बाद फिर इसी के साथ जुड़े हुए कुछ और बहुत सारी घटनाएं हैं, जलियांवाला बाग है। ऑल दीज थिंग्स वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन। The number of activities which are conducted in the school, speeches, essay writing on this particular topic. Now this time we had given a theme that children should come out with different festivals जो अलग अलग त्योहार हैं जो पूरे हिंदुस्तान मनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग सीजन में। जैसे फसल कटने का टाइम आता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया है, चाहे साउथ इंडिया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वेस्टर्न इंडिया है, हर जगह कोई ना कोई त्यौहार इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये असी सारे बच्चों ने एक टास्क दिता है कि वो नेट पे जाके चेक करेंगे किड़े किड़े त्यौहार ने जो बाकी के स्टेट्स में मनाए जाते हैं। सो इन अ वे जो इस बार हमारा एक वीक भी चल रहा है कल्चरल यूनिटी वीक, तो कल्चरल यूनिटी एंड सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके असी इस बार एक प्रोग्राम कर रहे हैं। एवरी सैटरडे एज सच वी हैव अ एक्टिविटी पीरियड। तो आने वाले टाइम में अगले शनिवार यानी कि 15 तारीख को एक्टिविटी पीरियड में बच्चे अलग अलग क्लासेस के बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 4th 5th दे विल ड्रॉ certain caricatures or they will write some poems. 6th 7th 8th they will write about cultural significance and the historical facts about Baisakhi, and others will write about कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड बाकी फेस्टिवल्स इंडिया में क्या क्या हैं। ये है सीनियर विंग के बारे में।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਵ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀज़ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। जूनियर विंग के अलावा वी ऑल्सो हैव अ किड्स जोन, तो आज किड्स जोन में बड़ी हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो थोड़ी देर फिर असी तुहानू लेके भी जावांगे उत्थे, ताकि तुसी खुद फर्स्ट हैंड इसको विटनेस करो। तो इस प्रोग्राम के जरिए से मैं तुहानू सब नू एक बार फिर से बैसाखी दी ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਈਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? देखो जी, तुहानू पता है एज सच आज तक भी स्कूल पूरे इलाके सबसे वधिया स्कूल माना जाता है जहाँ तक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और पर्टिकुलरली ICSE स्कूल्स का सवाल है। बट हुण साडे जिहड़े वाइस चेयरमैन साहब ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और जो आजकल हमारी पैटर्न है मिस हरकीरत कौर बादल, उन सब का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्कूल के साथ है अभी कि every day almost on daily basis they are monitoring the progress, they are also investing lot of money, बहुत पैसा इधर इन्वेस्ट किया जा रहा है और एक खास एम के साथ वो इन्वेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज they want to give best of the facilities to the children of this area। इस बेल्ट के छोटे छोटे बच्चों के लिए सबसे वधिया मतलब वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ इस स्कूल के उत्ते क्रिएट की जा रही हैं। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ जो साड़ी टीम है, साढ़े टीचर्स ने, साड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो सारे इन्हें मिल के एक वेल ऑयल मशीन की तरह जिस ढंग से काम करते हैं, उदा ये फ़र्क है कि सानू ये देखने को मिल रहा है कि स्कूल का नाम और अच्छा हो रहा है पूरे इलाके और एडमिशन भी बहुत बढ़ रही है। उसी का रिजल्ट है कि एडमिशन्स भी बढ़ रहे हैं। सर, क्या मैसेज रहेगा आपका कि जैसे ये स्कूल है जो विद्या का दान, जिसमें एक ये स्लोगन है कि हमने यहाँ से पैसा नहीं लेकर जाना, हमने यहाँ से बच्चों को कुछ ना कुछ देना है, इस एरिया के बच्चों को देना है, क्योंकि मालवा के ये जो बेल्ट है थोड़ा सा जाकर अगर हम चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा हम लोग इसको बैकवर्ड मतलब बैक फुट पे देखते थे, लेकिन आप लोगों ने इसको भी फ्रंट फुट पे बना दिया। आप लोगों ने कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, SDMs और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर है जो अलुमनी यहाँ ने दे दी है। और आने वाले समय में जैसे यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, जैसे यहाँ पर एक ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे जो बाहर भी जा रहे हैं वो भी एक नई क्रिएशंस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखो जी, साडा एम यही है राइट फ्रॉम डे वन असी ये दिमाग च लेके चलते हैं कि ये जिहड़े बच्चे ने इन्हां दा कंपटीशन है चंडीगढ़ और दिल्ली वाले बच्चों के नाल। तो राइट फ्रॉम डे वन असी एक कोशिश करते हैं कि बच्चे दा development, his personality development, not only in terms of academics but also in terms of co-curricular activities, his communication skills and his exposure to the games etc. ये उस लेवल का हो जो बड़े बड़े शहरों में होता है। तो ये साड़ा हमेशा से एफर्ट रहा है, हुण भी है और आगे और ज़्यादा होगा। और विद गॉड्स ग्रेस जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज स्कूल के अंदर आ रही ने, उसके बाद इतना कुछ असी दे पाएंगे बच्चों को कि यहाँ के बच्चे जितना अभी compete कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आगे जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
On this special occasion of Vaisakhi, I would like to thank you all for sparing your valuable time and visiting us and celebrating this memorable event with the small children of our school. In fact, I am deeply honored and greatly touched by your esteemed presence here in the school. Thank you so much. And I would like to thank all my teachers, their continuous support. However, we had a very small interaction. I just joined the school, and the support and the motivation, they have to do well with the children, to treat them as their own wards is outstanding. And thank you so much, teachers. Thank you. And last but not the least, Pooja ma'am, thank you so much. And above all, my sweet little children who were there and who performed very well. Thank you so much, children. Thank you so much. A very good afternoon to the entire team from Punjab News. We heartily welcome you to the Kids Zone here of Malwa School. This is the place where we are standing, is basically the foundation of the Malwa School. And now from this area only we have developed two more schools, that is Malwa Junior Wing and Malwa Senior Wing. This is Kids Zone Malwa School and headed by Mrs. Surdeep Kaur, wife of Colonel Ranbir Singh from Malot. She is a very dedicated headmistress over here. And here where we are standing is the playpen area for our kids, where they literally enjoy in the grass and taking swings, merry-go-round, mulberry bush, and many of the seesaw swings which are just kept here for their amusement and recreation. So our children, they are given very lively atmosphere over here. Once they enter the premises of the Kids Zone, they really enjoy, and the love and the care given by the headmistress over here is worth praising. So once again I would like to thank you for visiting this area, and you really appreciated the activities performed by the children. Now I hand over my mic to Ma'am Surdeep. She will also be sharing her views with us. Ma'am. Thank you so much, Gurvinder ma'am. Thank you. To begin with, as you know, the Malwa School has a great history. The school holds a very good motto, and that to be very outstanding motto throughout the region, which says mentally alert and physically strong. So following that motto here in Malwa Kids Zone, we look after the holistic development of the child. ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Here in Malwa School, every aspect, be it emotional, be it a social or an intellectual aspect, is covered very properly in this Malwa School. I would like to show you the school, and we have couple of classes here in the school. So I'll be taking you to all the classes, and we'll be showing you from playway, then to the nursery, and then to LKG. So if we move ahead, so we have 6 to 7 classes here in this campus. And to begin with, we have playway class, which has been named as Marina. So that's a smart class we have, and the classroom is quite big, and we have installed ACs for the comfort of the children, because as you all know, the weather is really harsh. So we have got toys in this classroom. Apart from that, there are there are swings and the smart board. You can see the happiness of the children. Bete, say hi, hello, good afternoon, hi, hello. So we have trampoline here along with the projectors, where the rhymes are continuously played for the development of the children. Moving ahead, so we have next room that is the LKG Petunia and LKG Sunflower. So this is LKG Sunflower, where you can see the children have been asked to sit in a semicircle so that they can always interact with their
classmates and they get to know each other. The teachers sit in between the children so that it would be very easy for the teacher to do the activity. As today we are celebrating Vaisakhi, so you can very well see the activity being done by the children here, where they have placed the twigs of wheat on the sheets. So if you can pay close attention to it, the twigs are being brought by the children only, and their names and the date has been written, and these activity sheets will be handed over to the parents at the graduation ceremony, which will be held in the month of March next year. So if you have a close look of the blackboard again, it is stating Happy Vaisakhi as well as the work done in the class. Moving ahead, we have LKG Petunia here. The classes are well decorated as well as classes are well lit. Apart from that, you can very well see the ACs are installed in the classrooms along with the necessary things which the child needs to know at this age. You can see the pictures of the animals, you can see the pictures of the water animals, followed by the color identification, followed by the directions. Not only this, we lay emphasis on the prayer, so we never forget God in our daily routine. So we have got a prayer also in the classroom. So you can see the different shapes in the classroom as well as the different birds birds picture in the classroom. Apart from this, big size dustbins are also kept in the classroom to maintain the cleanliness in the school campus. Now moving ahead, we have nursery Tinkerbell. So Tinkerbell, in nursery we generally take the child of 3 years of age, and we generally keep the strength of the class less than 25. So here we come to the class nursery Tinkerbell. If you can see in the corner, the bags of the children are kept separately. Water bottles are kept separately so that the children do not mess and spoil the class in between during the learning. Apart from that, you can see the classroom. It is well decorated, again well lit, along with the AC being placed on the top for the comfort of the children. If you see the blackboard, it again shows the number of children present and the work done in the classroom. Say hello. 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 So you can see the children are so happy and they are very excited. It's almost 12, so they'll be leaving soon for their homes. So they are done with their lunch. If you look into the corridors, we have days of the week, we have months of the year, we have traffic signals and some important words which are very much required during our life. So those words like thank you, please, welcome, sorry, these have been constantly told to children to follow and to speak. Now we move ahead towards nursery slow bell, which is being looked after by Madam Ravneet. So here we enter the class. So now again I'll request you to see the arrangements which have been made to keep the bags and the bottles separate. Apart from that, to keep the notebooks again separate, we have well decorated boards, soft boards. Hi, hello children, good afternoon. Hello. So you can see the excitement and the happiness on the faces of the children. Apart from that, the classes have the suitable table and they are quite spacious so that children can move around. Moving ahead is one activity area we have, because the weather is not conducive to conduct all the activities in the lawn. So we have one small activity area where we get the children together and we do the complete activity where maximum strength of the children are involved. So we have couple of games for them. So apart from that, we have got the green sheets for them to be seated comfortably, along with the number of the chairs which have been placed there for the comfort of the children. Now coming to the one of the most important thing, that is the toilets, which needs the attention. So the toilets as well as the drinking point, water point for the children is very important. So here we have the different toilets for the boys as well as for the girls, and the ayahs always sit there to help the children to do their
daily chores. Or in Malwa Kids Zone, I would like to say that holistic development, which is missing in most of the school. Here, that aspect is covered very well and in a very systematic and in a very nice way. So I'll request you all those who are watching this, to please visit the school once at least, so that you can see and feel and have the experience of all these things by yourself. Thank you so much. See, all those who dream, they only achieve higher goals in the life, and it is a big dream of our BBG, which has reached to a greater height, and it is soaring to the successes only. So अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आई डोंट थिंक सो कि हम किसी से कम हैं. थैंक यू मैडम. थैंक यू सो मच.